जय हिंद डियर पेरेंट्स एंड लर्नर्स। हमने बहुत से बच्चों को देखा है जो दूसरों से बात करने में हेजिटेशन फील करते हैं, थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 पावरफुल ऐसे ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप शाय स्पीकर से बन सकते हैं सबके लीडर। यू नो, चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न शाय, एक्चुअली दे नीड सम कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस एक स्किल है, एक मसल की तरह है जिसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद गेन कर सकते हैं। और आज की जो 3 ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जो 3 सीक्रेट्स मैं आपके सामने रिवील करने वाली हूँ, इन्हें इस्तेमाल करके बहुत सारे बच्चे जो पहले नर्वस थे, हेजिटेट करते थे, आज बन चुके हैं बिल्कुल बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर। सो लेट्स बिगिन टुडेज जर्नी। आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इफ यू विल वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड, you will get to know how to transform your voice, your presence and your confidence to become a leader. So let's begin. And the habit number 1 is a very common habit. इतनी simple एक habit है जिसे हम अक्सर ignore कर देते हैं। एक डेली हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। आपको रोज एक किसी नए इंसान के साथ बात करनी है। जी हाँ, यू हैव टू सर्च फॉर अ न्यू पर्सन। दे कैन बी शॉपकीपर्स, योर कोलीग्स और सिक्योरिटी गार्ड, आपके जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड है, कोई भी वो हो सकते हैं। आपको उनसे करनी है सिर्फ 5 मिनट डेली कन्वर्सेशन। इससे हो क्या? दिस स्मॉल कन्वर्सेशन विल टीच योर माइंड दैट टॉकिंग इज ईजी, टॉकिंग इज सेफ एंड टॉकिंग इज नॉर्मल। जब आप इस हैबिट को डेली फॉलो करेंगे तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे। एज पर द साइंस इट विल कंसिडर, तो इट कैन रिड्यूस द 70% सोशल एंग्जाइटी एंड दैट टू इन 30 डेज। सोचिए, सिर्फ 30 दिन आपने 5-5 मिनट इन्वेस्ट किए किसी से बात करने में, और आपकी जो सोशल एंग्जाइटी है, दूसरों के सामने जो झिझक है, जो हेजिटेशन है दूसरों से बात करने की, इसे आप 70% तक रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। यू कैन स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। रोज एक नया इंसान, एक नई हेलो, और बस हो गया। एंड द हैबिट नंबर 2 इज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन मीन्स you need to see, then you need to believe, and obviously you will become that. This is the technique which is used by many world-class leaders, CEOs and athletes. What they do? Actually, before going for any meeting or presentation or any of the interview, they take 5 to 10 minutes. पहले 5-10 मिनट लेने हैं, शांति से बैठना है, एंड यू नीड टू विजुअलाइज। आपको सोचना है, आपको इस चीज़ को महसूस करना है कि आप स्टेज पर खड़े हैं एंड यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, पीपल आर लिसनिंग यू। Then what will happen? Your brain will get a message. If you will visualize the success, your brain will understand that you have already achieved that. And your performance during the real conversation or during the real moment will become much better. And that's why winner says that winner visualize victory before they achieve it. You can try this technique just for 7 days and you can feel the shift. And the habit number 3 is master your body language, because your posture powers your presence. It's an incredible habit and it just needs 1 minute. What you are supposed to do, actually it's called posture power technique. And for this, you need to stand tall, keep your chest open, shoulders slightly at the back and chin slightly up. What will happen from this? Your brain will get a message that I am safe, I am strong, and I am confident. It will increase your happy hormones. You will become more confident. It will reduce your stress hormones. So this is the magic of your body language. And trust me, your body language speaks louder than your words. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 हैबिट्स बता दी हैं, बट खाली हैबिट्स के पता चलने से तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ मोटिवेशन से काम चलने वाला नहीं है। यू नीड टू डू समथिंग ऑल्सो। आपको कुछ करना है। इसके लिए आपको लेना है 21 डे चैलेंज। व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दिस चैलेंज? फ्रॉम डे 1 टू डे 7 आपको हैबिट नंबर 1 इंप्लीमेंट करनी है। एंड हैबिट नंबर 1 इज स्मॉल टॉक्स विद समवन न्यू। आपको रोज किसी नए बंदे से बात करनी है। एंड फ्रॉम डे नंबर 8 टू डे नंबर 14, along with the habit 1, आपको उसमें ऐड करना है 5 मिनट पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। And from the day 15 to day 21, along with the previous 2 habits, you need to add the habit number 3, that is power pose technique.
अगर इन तीनों टेक्निक्स को आप 21 डेज तक, जैसे मैंने बताया है, वन बाय वन यू विल नीड टू इम्प्लीमेंट दैट, यू नीड टू ऐड दैट, और 21 डेज तक अगर आप इस चैलेंज को करते हैं तो यू विल सी अ मेजरेबल शिफ्ट इन योर कॉन्फिडेंस, इन योर वॉइस, इन योर लीडरशिप प्रेजेंस। एंड यू नो व्हाई आई एम सो श्योर कि जब आप ये 21 डेज का चैलेंज लेंगे तो आप अपने अंदर एक शिफ्ट महसूस कर पाएंगे, बिकॉज वॉट एवर आई सेड अबाउट दीज थ्री टेक्निक्स, दीज आर नॉट जस्ट थियोरी, ये थियोरी नहीं है, दीज आर प्रूवन टेक्निक्स। यू नो, जिन लोगों के ऊपर ये जो स्टडी हुई है, जिन्होंने इन टेक्निक्स को फॉलो किया है, in that we observed a very good change. 78% of them got speaking confidence. 65% of them has dropped their social anxiety. 65% social anxiety जब कम हो जाती है तो you can assume कि आपने एक कितना अच्छा change अपने अंदर ले आया है. And you know 82% chances are increased to get the good job opportunities, as well as 90% of them feel more respected while conversations. आप भी इन numbers में कहीं ना कहीं खुद को देख सकते हैं. What you need to do? Just press your call to action button and take this challenge for 21 days. पहली हैबिट को आज ही से इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए and just commit yourself for the next 21 days. My dear students, the world is waiting to hear your voice. If you are hiding yourself, doubting, and shrinking yourself, this is the right time to rise. The world needs your voice, your ideas, and your presence. Don't stay invisible. Lead with confidence. And RevAnthem is always there to help you in this your confident journey. Follow RevAnthem for more leadership tips and book your personality session, personality grooming sessions whenever you are ready. Because at Revantham, we just don't teach confidence, we build leaders. So stay connected with Revantham. Jai Hind.